Namaskar, dear students. I'm Dr. Ruchi Vadva, and today I'm here with you to tell you a very interesting story, The Three Questions, by a very famous writer, Leo Tolstoy. First of all, let us know something about the writer. Leo Tolstoy was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. He was born in 1828 and died in 1910. He was nominated many times for the Nobel Prize in Literature and for the Nobel Peace Prize also. He wrote short stories, novellas, plays, and philosophical essays. He is best known for his two novels, War and Peace and Anna Karenina. He had a profound impact on two important figures of 20th century, Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. सो आई होप इस स्लाइड से आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कितने महत्वपूर्ण लेखक की लिखी हुई कहानी पढ़ने जा रहे हैं. नोबेल प्राइज़ के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी उन्होंने बहुत प्रभावित किया था. So here is a painting of Leo Tolstoy. You can have a look at the picture of this writer whose story you are going to read. So what was Tolstoy's influence on Gandhiji? Leo Tolstoy greatly influenced the father of our nation, Mahatma Gandhi. Tolstoy's book, The Kingdom of God is Within You, and his essay, Christianity and Patriotism, deeply affected the thought process of Gandhiji. The world-famous principle of non-violence or ahimsa was deeply embedded in the writings of Leo Tolstoy. Both Gandhiji and Leo Tolstoy adopted the idea of love to solve the problems of life, and for both of them, non-violence could cure all social maladies and bring peace on the earth. I hope you have understood कि महात्मा गांधी के जो अहिंसा या नॉन वायलेंस का जो सिद्धांत था वो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग से ही प्रेरित होकर लिया था. गांधी जी और लियो टॉल्स्टॉय दोनों ये मानते थे कि प्रेम के द्वारा इस धरती की सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं महात्मा गांधी को टॉल्स्टॉय फार्म पे, जो कि साउथ अफ्रीका में था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैन यू स्पॉट महात्मा गांधी इन दिस पिक्चर? यस, he is sitting in the corner at your right. Okay, now about the story. The Three Questions is a short story by Leo Tolstoy, which was published in 1885 as part of a collection, What Men Live By and Other Tales. There is a king in the story whose mind is suddenly surrounded by some questions, but he is not able to get the correct answers of these questions. What were those questions? These questions are: Number 1, what is the right time to begin something? Question number 2, who is the most important person? And question number 3 is, what is the most important thing for him to do? So इस कहानी में एक राजा है जिसके दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं,
परंतु वो उनका सही उत्तर जान पाने में तुरंत ही समर्थ नहीं हो पाता है। ये प्रश्न क्या है कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और उसके लिए किया जाने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। My dear students, I have tried to explain this story to you with the help of some pictures so that you can understand it in a better manner. So as I told you, there was a kingdom. Okay, so in this picture you can see the king. So once there was a king who thought that to be a successful ruler, he must know the answers of 3 questions. The questions were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? The king sent messengers in all directions to find people who could answer these questions. Many wise men came, but their answers were all different. For the first question, some of them felt that the king should follow a timetable, while there were others who felt that it was not possible to decide the right time for doing something in advance. Similarly, for the second question, some wise men said that the king should follow his counselors, while others thought it was the priest whom the king should listen to. Then there were others who felt that it was the doctor the king should obey, while there were many in favor of soldiers. For the third question, some wise men said science should be of highest priority for the king, while others said religion. तो इस स्लाइड में क्या पढ़ा हमने? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राजा के दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं। राजा उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सभी दिशाओं में अपने संदेशवाहक भेजता है। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति उसके दरबार में आते भी हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, परंतु उनके उत्तर आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ व्यक्ति कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसे अपना हर कार्य सही समय पर कर लेना चाहिए, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि पहले से ही किसी कार्य को करने का सही समय जान पाना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा को उसे अपने दरबारियों की सलाह लेनी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि उसे पुजारी की सलाह लेनी चाहिए। फिर कुछ व्यक्ति वो भी थे जिन्होंने ये कहा कि राजा को अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए। किसी ने कहा कि राजा के लिए तो सेना और सैनिक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि विज्ञान राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये मानने वाले थे कि धर्म एक राज्य और एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। Obviously, the king was not satisfied with these answers as they were so different from one another. He did not give any reward to anyone and thought to seek the consultation of a wise hermit who lived in the jungle. The hermit used to see only ordinary people, so the king dressed up like a normal man, leaving behind his horse and bodyguards, and went to the hermit's hut. The hermit was an old man and was busy digging the ground in front of his house. The king told the hermit that he had come in search of his answers for the 3 questions and repeated them. The hermit did not respond and continued digging the ground. As the hermit was old and weak, the king offered his help. The king continued digging the ground till the evening. In the evening, the king asked
again requested the hermit to answer his questions. But at that moment, someone came running towards the hermit's hut. So did you get the meaning till here? तो ये जो राजा है, इसे किसी भी उत्तर से संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि सभी उत्तर आपस में एक दूसरे से इतने अलग थे। तो इसलिए उसने किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया और उसने एक बुद्धिमान संत की सलाह लेने का सोचा, जो कि जंगल में रहता था। लेकिन यह संत तो केवल सामान्य लोगों से मिलता था। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, राजा ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही कपड़े डाले, अपने घोड़े को, अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ दिया और अकेला ही उस संत की कुटिया की तरफ चल पड़ा। अब यह संत जो है वो एक वृद्ध व्यक्ति था और अपने घर, जो कि एक कुटिया थी, उसके सामने भूमि खोदने में व्यस्त था। तो राजा ने इस संत को बताया कि वो 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है और राजा ने ये 3 प्रश्न दोहराए। लेकिन इस संत ने किसी भी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया और भूमि खोदना जारी रखा। अब चूंकि यह हर्मिट, यह संत बहुत ही बूढ़ा था, कमज़ोर था, तो राजा ने अपनी सहायता उसे देने का प्रस्ताव रखा। राजा ने भूमि तब तक खोदना जारी रखा जब तक शाम नहीं हो गई। जब शाम हो गई तो राजा ने फिर से हर्मिट से रिक्वेस्ट की कि वो उसके प्रश्नों के उत्तर उसे दे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति भागता हुआ उस संत की कुटिया की तरफ आया। Now you can see in this picture that there is a wounded man and the king is taking care of him. A man came running towards them with a hand on his wounded stomach. The king cleaned the wound and dressed the wound, controlling the flow of blood. The man felt better and asked for some water. The hermit and the king took the man inside the house. The man was lying quiet inside the house and the tired king also fell asleep on the ground. तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि एक घायल व्यक्ति है, उसके पेट से खून बह रहा है और राजा, जो कि एक साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में है, वो उसकी सेवा कर रहा है, उसके घावों की मरहम पट्टी कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये संत और राजा उस व्यक्ति को अंदर लेकर जाते हैं। यह व्यक्ति चुपचाप जाके लेट जाता है। राजा, जो कि दिन भर के कार्य से थका हुआ है, क्योंकि उसने भूमि भी खोदी थी, वो भी जमीन पर ही लेट जाता है और वहीं सो जाता है। Now what happens next? Okay, now you can see in this picture that the king and the wounded man are talking to each other and the king seems to be very happy. So this is the scene of the morning, the next morning. In the morning, when the king opened his eyes, he saw the wounded man asking for forgiveness. The man told the king that he had come to take revenge on him because the king had killed his brother and had taken away all his property. He wanted to kill the king while returning from the hermit's place. But the king's bodyguards found him and wounded him. He would have died if the king had not helped him. He regretted his thoughts of killing the king and promised to be his faithful servant. The king was pleased to turn his enemy into a friend. He forgave him and returned all his property. Okay, I hope it's clear what happens here. कि अगली सुबह जब राजा अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ये घायल व्यक्ति तो उससे क्षमा मांग रहा था। इस व्यक्ति ने बताया कि वो तो एक्चुअली राजा से बदला लेने आया था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। वह संत की कुटिया से लौटते समय इस राजा को मारना चाहता था।
परंतु राजा के अंगरक्षकों ने उसको देख लिया और उसे घायल कर दिया। वो तो मर ही जाता अगर राजा उसकी मदद नहीं करता। तो उसे पछतावा भी हुआ कि उसने राजा को मारने के बारे में सोचा, जबकि राजा ने ही उसकी जान बचाई। तो उसने राजा से वादा किया कि वो राजा का एक वफादार नौकर बनकर रहेगा। राजा बहुत खुश था इस बात से कि उसने अपने एक घोर शत्रु को अपने मित्र में बदल लिया था। तो उसने उसे माफ कर दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी उसे लौटा दी। Now what happens? The king then went to look for the hermit who was sowing seeds in the beds that they had dug the day before. He requested the hermit for the last time to answer his questions. To this, the hermit replied that the king had already found the answers. If the king had not pitied hermit's condition the day before, then the men would have attacked him on his way, and he might have lost his life. So, the most important time was when he was digging the bed, and the hermit was the most important man. To help the hermit was the most important task. When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, else he would have died of his wounds without the two of them reconciling for their acts. So, at that moment, the wounded man was the most important man, and nursing him was the most important business. Finally, the hermit said to the king as conclusion, "The most important time is now, because it is the only time when we have the power to act. The most important person is the person you are with at a particular moment. Because future is unknown to all of us, and there is always an uncertainty about meeting anyone else. The most important job is to do good to others, because we have been sent to this world for this noble cause only." So here our story ends. The last part was very important. Did you get the meaning of it? Okay, let me translate it for you. तो अब उस व्यक्ति से तो संधि हो ही जाती है राजा की, और अब राजा उस संत को ढूंढने लगता है अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। अब ये संत जो है, ये जो भूमि पिछले दिन उन्होंने खोदी थी मिलके, उसमें बीज बो रहा है। राजा उस हर्मिट से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके प्रश्नों के उत्तर दे। इस बात पर हर्मिट जवाब देता है कि राजा को तो पहले से ही प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब कैसे? तो वो एक्सप्लेन करता है कि अगर राजा को संत की कंडीशन पर दया नहीं आई होती, तो उस व्यक्ति ने, उस घायल व्यक्ति जो आया था, जो कि राजा का शत्रु था, उसने वापस लौटते समय राजा के ऊपर अटैक कर दिया होता, और हो सकता है राजा अपनी जान भी खो देता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब वह भूमि खोद रहा था, क्यारियां खोद रहा था। संत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और उस संत की मदद करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अब जब ये घायल व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब राजा उसकी सेवा कर रहा था। अदरवाइज तो वो घायल व्यक्ति अपने घावों के कारण मर जाता, और उन दोनों के बीच संधि ही ना हो पाती, और राजा का एक शत्रु मित्र में बदल नहीं पाता। इसलिए उस समय घायल व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसकी सेवा करना राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो अंततः निष्कर्ष में यह संत राजा को बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप किसी खास क्षण में हैं,
क्योंकि भविष्य को हम में से कोई नहीं जानता और भविष्य में हम किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, इस विषय में अनिश्चितता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए है दूसरों की भलाई करना, क्योंकि आखिरकार यही वो बात तो है जिसके लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है। इस पवित्र कार्य के लिए ही हमें धरती पर भेजा गया है। तो राजा इन प्रश्नों के उत्तर सुन के संतुष्ट हो जाता है और यह सच भी था, क्योंकि राजा ने उस घायल व्यक्ति की भलाई की जिसके कारण उसकी जान भी बची और उसे अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखने को मिला। तो यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, as you know, every story has a moral and this story also has a moral. So what is the moral of this story? The moral of the story is to live in the present moment. We should not keep complaining about the past and getting anxious about the future. We must consider every person we are meeting at that point of time as the most important person, and whatsoever work is there before us at that moment, we should give primary importance to that only. तो हमने इस कहानी के सबक के तौर पे क्या सीखा? यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें वर्तमान समय में ही जीना चाहिए। हमें भूतकाल के विषय में या वो समय जो बीत गया है उसके विषय में शिकायत नहीं करते रहना चाहिए और ना ही भविष्य के विषय में चिंतित होते रहना चाहिए। हमें हर उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझना चाहिए जिससे हम किसी खास क्षण में मिल रहे हैं, और किसी खास क्षण में जो कार्य हमारे समक्ष है, हमारे सामने है, हमें उस कार्य को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। Dear students, whenever I teach this story in my classroom, in the end, I always ask my students, what did you learn from the story and how can you apply the moral of the story right here? Okay, so it's the same question I'm going to ask you people. What did you learn from the story and can you apply the moral of the story right now, right here? Can you ask yourself these 3 questions? Okay, so I ask you people कि आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय आपके लिए कौन सा है और इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? Can you answer me? Yes? Okay, let me tell you. Let me explain. The most important time for you people is now when you are listening to my presentation. And if you do so, you will be able to understand this presentation in a better manner. Okay? अगर आप मेरी presentation को अच्छे से सुनते हैं, आप वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हैं, तो निश्चित ही आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इसे अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय कौन सा है? Who is the most important person for you right now? If you are sitting in a classroom, then the most important person for you is your teacher. And now I am teaching you the story. So, the most important person for you people is me. Okay? तो आपको मेरी बात सुननी चाहिए। बात सुनने से मतलब है कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन को यहाँ ध्यान से सुनना चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और मैं जो कह रही हूँ उस पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। अगेन, अगर आप ऐसा करते हैं, इफ़ यू आर एबल टू डू सो, you will be able to understand this presentation in a much better manner. Okay, so what was the third question? That what is the most important business for you to do? Can you apply this question right now, right here? Okay, what is the most important business for you people?
the most important business for you people again is to read the story carefully, to listen to this presentation carefully. यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. आप सब स्टूडेंट्स हैं और आपके लिए क्लासरूम में बैठे हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पढ़ना. इससे महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए क्या हो सकता है? और अगर आप अपनी क्लासेस में कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, इस प्रेजेंटेशन को भी आप कंसंट्रेशन से सुनते हैं, तो निश्चित ही आपको यह बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगी और आप एग्जामिनेशन में इसके आंसर्स बहुत अच्छे से कर भी पाएंगे. तो अब जब क्वेश्चन और आंसर्स की बात आ ही गई है, तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं. So my next slide is about suggested questions. What are the 3 important questions asked by the king? I hope it's clear till now. अब तक तो ये क्लियर हो ही गया होगा आपको कि राजा के द्वारा पूछे गए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से थे. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से थे? अगर आपने ये प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनी है तो आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे. एंड इफ एनी स्टूडेंट इज देयर हु इज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, देन he or she needs to read the story again and to listen to this presentation again, because this is a very simple question which you have read again and again in this story. Next question is, what are the answers given by the hermit? hermit ने क्या उत्तर दिए प्रश्नों के? Third question is, how did the king get to know the answers of his questions? राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल तो जाते हैं, परंतु वो किस तरीके से मिलते हैं, किस प्रकार hermit एक्सप्लेन करता है. तो इसमें आपको वुंडेड मैन की स्टोरी बतानी है कि उसके माध्यम से राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं. Through the episode of Wounded Man, the king gets to know the answers of his questions. And in the end, what is the moral of the story? And we have already read the moral of the story, that we should live in present. Yes, students, I hope it's clear. I have tried to explain it in a very simple manner. I have tried to take the help of some pictures so that you can understand the story very well. So, in the end, keep smiling and keep working hard. Thank you. Namaskar.